In a given diagram, there are two circles with center O and O dash. We have to prove that AP is equal to BQ. Let us extend AP and BQ. And let the AP and BQ meet at R. Now listen student, for bigger circle, RA is equal to RB. Length of tangents are equal from external point. Similarly, for smaller circle, RP is equal to RQ. Length of tangents from external point to the circle. Now we will subtract these two equations. RA minus RP is equal to RB minus RQ. Now see diagrammatically, RA minus RP means AP and RB minus RQ means BQ. So hence we prove that AP is equal to BQ. In a given diagram, POQ is a diameter of circle with center O, L and M are parallel tangents and another tangent ACB whose point of contact is C. We need to find the angle AOB. So student, listen here, the concept we will apply here. On a circle, if two tangents are intersecting each other, then the line which bisect these angles will passes through the center. In other words, we can say the center lies on the angle bisector between two tangents. We will use this concept here. Here AP and AC are tangents and this line passes through the center. So it means OA is an angle bisector. So we can suppose these two angles XX because it is an angle bisector. In the similar way, let us suppose these are YY. Using this concept, since L and M are parallel tangents, so these angles are co-interior opposite angles whose sum is 180. So we can write X plus Y is 90 degree. Now in triangle AOB, using the angle sum property of triangle, angle X plus angle Y plus angle this AOB is 180 degree. And X plus Y, we already deduced 90 degree. So in place of X plus Y, we will write this 90 degree. So 90 here will be subtract from 180. AOB is equal to 90 degree. This is the answer. In a given diagram, there is a circle with center O and PA and PB are tangents to the circle from external point P. We need to find the angle X. We know that in a circle, radius is perpendicular to the tangent. From center OA and OB are radii. So these are perpendicular to the tangents. So this is 90 and this is also 90. Radius is perpendicular to the tangent. Now in quadrilateral PAOB, total angle sum is 360. Four angle sum is 360. So we'll find out first AOB. So angle AOB is 110. Now listen student, angle at the center of circle is twice of the angle at remaining part by same arc.
So this is 110, so this should be 55. So angle AQB is 55 degree. Now concentrate on A, and this point we can consider R. ARBQ is a cyclic quadrilateral because all vertices lie on the circumference of circle. So this angle X plus this 55 is 180 degree. There is the rule of cyclic quadrilateral, opposite angle sum is 180 degree. So the value of X is 125 degree. This is the answer. In a given diagram, AB is 6 cm, BC is 4 cm and AC is 5 cm. We need to find the length of AQ. We'll add these all sides AB, BC and AC. BC. See, we can write BP plus BC instead of the BC. Now see here, BP is a tangent and BQ is also tangent. So this is a concept. The length of tangent from external points are equal. So in place of BP, I am writing BQ. And in place of PC, I am writing CR. The concept we are using, see, this is a circle. These are the tangents from external point. The length of tangents are equal from the external point. The same concept we are using here and here. Now AB plus BQ is AQ. This AB plus BQ, AQ, and CR plus AC. This is AR. Now again here we will use the same concept, length of tangent from external point A. AQ is equal to AR. These two are equal. So we can write here twice of AQ. Reason AQ is equal to AR. Length of tangents from external points. AQ is equal to 15 upon 2. So AQ is equal to 7.5 centimeter. ABC is a right angle triangle with perpendicular 16 centimeter and base 12 centimeter, and there is an inscribed circle with center O. We need to find the radius of this circle. First of all, we will use the Pythagoras theorem and find out AC. So AC is 20 centimeter hypotenuse. Now we will draw the perpendicular on each side from the center. Join the vertices of triangle with center. Now listen student, we will use this concept. Area of triangle ABC comprises triangle OAB plus OBC plus OAC. Now area of triangle OAB, half base into height. Height, we can suppose this perpendicular X because all are radii from center to circumference. So we can suppose each X, half base into height, plus OBC, half base into height,
प्लस OAC हाफ बेस 20 इंटू x is equal to area of triangle ABC. See, it is a right angle triangle, half base into height. Six 4 is 24, 4 4 is 16, so x is equal to 4. So radius of circle is 4 centimeter. Example 3, most important example है ये भी, ध्यान से देखिए. PQ is a chord of length 8 centimeter. PQ एक chord है जिसकी length 8 centimeter है और radius इस circle का 5 centimeter है. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. ये tangents यहाँ पर ये T पर मिलती हैं तो हमें TP की लेंथ निकालनी है. न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आइए इसको भी हम बोर्ड पर समझते हैं. तो आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल 3 का हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं. ये बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम इस OT को ज्वाइन कर दें. अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने थ्योरम में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक लाइन दिया हुआ था, उसको हमने अंडरलाइन भी किया था कि सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट्स. अगर दो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में लाइन जा रही है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा अगर ये सेंटर से जा रहा है. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, इस पर परपेंडिकुलर रहेगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा. तो ये 8 सेंटीमीटर की दी हुई है कॉर्ड, तो ये हो जाएगी 4 4 की. तो यहाँ हम पाइथागोरस यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं. इसको हम समझ लेते हैं, ये R पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो OR फाइंड आउट करें. पहले पाइथागोरस से शॉर्ट लिख दिया मैंने. -16 9 का √3. OR हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर. अब यहाँ जो रेस्ट ऑफ सॉल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझिए. देखिए मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूँ उनको देखिए, TPO एंड PRO. TPO एंड PRO. TP इस पर परपेंडिकुलर है जैसा कि हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर दिस इज 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है और एक एंगल O कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाएंगे. ईच 90 डिग्री, ये रीजन आप लिख सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट. एन एंगल O मीन्स POT इज इक्वल टू POR. ये कॉमन एंगल, तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन. ये ब्लू TPO एंड दिस वन PRO, दिस स्मॉल ब्लू. तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अब देखिए स्टूडेंट, सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे. ये मैं ले रहा हूँ TP/PR. यहाँ समझिए TP/PR. ये आप ट्रायंगल में समझ सकते हैं, यहाँ आप नेमिंग में देख सकते हैं TP/PR, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइड्स होती हैं. OP/OR. TP हमको फाइंड आउट करना है अपॉन PR. 4 OP 5 एंड दिस OR 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर. सो दिस इज आंसर. लेंथ ऑफ TP आ गया 20/3 सेंटीमीटर. हमने यहाँ TP और PRO में प्रोपोर्शनल साइड्स ली. अब चाहें तो आप ट्रायंगल बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू. कुछ बच्चे यहाँ से ही प्रोपोर्शनल साइड ले लेते हैं, कुछ बच्चे इसे रफ में ट्रायंगल बना देते हैं, तो वो भी मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ. TPO, देखिए मैंने ये TPO को अलग बना लिया, ये 90 डिग्री. देन PRO, यहाँ R 90 डिग्री है, यहाँ ये P 90 डिग्री है. अब देखिए TP/PR जो हमने लिया था TP/PR,
देन हमने लिया OP अपॉन OR, दिस OP अपॉन OR, और ये हमारा TP आ गया। बिल्कुल सिंपल, ये 90-90 है और ये O इससे सिमिलर हो जाएगा और प्रोपोर्शनल साइड्स हमने ले ली। तो आप चाहें तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डायग्रामेटिकली, और आप चाहें तो ये थ्योरेटिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कल है और इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर है और एंगल B 90 डिग्री है और ये डायमेंशंस गिवन है इसकी, AD 17, AB 20 एंड DS 3 सेंटीमीटर। हमको रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का। तो देखिए स्टूडेंट, डायग्राम मैंने बना दिया और डायमेंशंस भी क्वेश्चन में से लिख दिए। अब शुरुआत यहाँ से करते हैं। DS इक्वल टू DR, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये भी 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 17 है टोटल, इसमें से हम ये RD माइनस कर दें तो इतना पोर्शन आ जाएगा 14 AR। अब अगेन ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स AR इक्वल टू AQ, तो ये भी हो जाएगा 14। ये थ्योरम कॉन्सेप्ट्स आपने इंट्रोडक्शन में देखे होंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, उसी को हमने यूज़ किया है। पहले DS इक्वल टू DR, तो इससे हमने 3 निकाला, देन AR इक्वल टू AQ, तो ये 17 में से 3 गया 14, ये 14 है तो ये भी 14 हो गया। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये 20 टोटल, ये 20 है AB और AQ 14, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 6। अब अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स BQ इक्वल टू BP, तो ये 6 है तो ये भी 6। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं सर्कल वाले क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स और जो भी कॉन्सेप्ट है उनका यूज़ करना है ध्यान से। तो यहाँ भी हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ किया, देखिए। फिर अगेन यहाँ, अब यहाँ 6 है, ये 6 हो जाएगा। अब हम आते हैं मेन सॉल्यूशन पे। देखिए स्टूडेंट, ये 6 है, ये 6 है। अब OQBP ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ये 90 डिग्री गिवन है और रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब एक क्वाड्रिलेटर में 3 एंगल्स अगर 90 हैं तो चौथा भी अपने आप 90 हो जाएगा। अब यहाँ बात करें कि ये एडजेसेंट साइड इस क्वाड्रिलेटर के इक्वल है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, और ये भी इक्वल है, दोनों रेडियस है, तो ये क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि जिस क्वाड्रिलेटर में सभी 90 डिग्री हो और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो ये एक हो गया स्क्वायर। तो सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 एंड ये भी 6, तो रेडियस हमारा आ गया 6। तो ये है स्ट्रेटेजी। आइए अब इसको हम लिखते हैं। सो द आंसर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करिए।